Bismillah ar-Rahman Rahim. Assalamu alaikum and good morning. I am General Harun Aslam, retired, and I welcome you on behalf of Iqbal Institute of Policy Studies for a live webinar titled Construction Waste Management. From the onset, I would just like to say a few words about Iqbal Institute of Policy Studies. It is an independent research institute with a mission to generate, track, and advocate public policies towards the achievement of sustainable development in Pakistan. It is the first think tank in Pakistan that has a sharp focus on research on all dimensions of real estate development. In addition to taking on research projects for policy advocacy, IPS has embarked upon the concept of swift research, wherein it undertakes time-bound research and compiles a series of reports for policy and decision makers' attention. About this webinar, the construction industry in the world is the world's largest consumer of raw materials and natural resources and accounts for 25 to 40% of global carbon emissions. Yet very little gets reused or recycled. With urban areas constantly growing in population, infrastructure demand and construction will continue to have a significant impact on the way the world's resources are used. According to different estimates, 30% of construction material is wasted on site, and less than a third of all construction and demolition waste is recovered and reused. Therefore, to create a sustainable construction industry with minimal impact on the environment, the industry needs to minimize waste creation and maximize waste recycling. We are fortunate to have eminent panelists from diverse backgrounds who are considered specialists in their respective professions. The chairman of today's event is Dr. Sarosh Lodhi. He is Vice Chancellor at NED University of Engineering and Technology. He also has served as Dean of the Civil Engineering and Architecture Department and is renowned for his decades of experience in connecting academia with construction industry. He will act as chairperson of the webinar and we'll benefit from his opinion. Dr. Shahid Masood is an engineer and a researcher. He has served as member planning and design and member engineering Capital Development Authority, CDA. He has authored many international and national publications. He's a professional arbitrator and contracts expert. He will speak on topic current awareness and trends regarding construction waste in Pakistan. Welcome, Dr. Shahid. Thank you, sir. Dr. Asadur Rahman is Dean, Faculty of Civil and Petroleum Engineering, NED University of Engineering and Technology. He has worked on national and international projects on the use of recycled concrete, aggregates and structural concrete, and has several publications in international referral journals and international peer-reviewed conferences on the subject. He will dilate further on the topic use of recycled construction waste in structural concrete. We have with us Brigadier Dr. Muhammad Naseem Beg. There is another soldier on line, so therefore I have that kind of confidence. There's another soldier also. Thank you. He's a very accomplished gentleman. He's the Director, Consultancy and Structures at Frontier Works Organization, FWO, and has served this position for more than 3 years. He also served as Dean of Faculty of Civil Engineering at NUST and Dean of Faculty of Civil Engineer at Military College of Engineering. He's also an HEC approved PhD supervisor and over 30 years of experience in the field of construction. He will present his views on the topic Reclaimed Asphalt Pavement, RAP, a case study. Welcome, Dr. We balance it out as in generation, we cover the generation gap also. So we have a young person with us, Mr. Osama Rauf. He is the Director of Project Management at Kingcrete Builders. He's from the industry. He has more than 12 years of experience in construction sector with a diverse portfolio of projects in Lahore and Islamabad. He will speak on the topic minimizing waste creation on construction site. As regards conduct of webinar,
Each participant will speak for 15 to 20 minutes. After the round of speech by all participants, we'll have general discussion and Q&A session. मैं यहाँ बताता चलूं कि feel free आप इंग्लिश में बोलें, आप उर्दू में बोलें, मकसद ये है कि अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाना। अभी मैं दरख्वास्त करूंगा सर डॉक्टर सरोज लोधी से, सर योर ओपनिंग रिमार्क्स so that we can start the discussion. First of all, I would like to thank the Iqbal Institute and General Harun for providing a platform and touching upon some very relevant issues which requires policy deliberation. I have been part of these seminars and webinars in the past also, and have been immensely benefited, and I'm sure all the participants are equally benefited. As mentioned by General Saab, construction obviously is one of the biggest and most important sector in the economy of the countries. On one side, the construction, I look at it as the catalyst of propelling the economy and making the countries, more prosperous economically if the construction is handled in a careful and diligent manner and handled by the professionals. On the other side, obviously, the more construction that we do, the more urbanization that is taking place, there is a toll to everything that we do. And obviously, it hurts the environment in some way or the other at times very significantly. And carbon footprint is one of the largest regions of polluting the environment, especially when we use cement, and the kind of cement that we use generates a lot of carbon dioxide directly during the hydration process. And that is probably the biggest polluter in the construction industry. At the same time, on one side, where the construction is providing a lot of employment in different sectors, starting from unskilled labor to well-qualified engineers and anything and everything in between. So it provides a lot of employment, but at the same time, we end up removing some of the valuables like trees and other things which the cost has to pay. So, it's like a catch-22 situation where construction is important for propelling the economy of the country. Construction is one of the major sectors in providing employment. And it is not just one construction sector. There are a lot of downstream industry that are connected to the construction sector, and directly and indirectly, it provides a lot of economic support. At the same time, it is also providing a social dimension to it when the problems of housing are addressed. In developing countries like Pakistan, where housing remains a challenge, we have to look at the avenues of reducing the cost of construction in one way or the other, so that the problem could be handled without putting a lot of burden on the people, especially the low-income bracket people. For that, the present government has already started working on the initiative. NAFTA, Naya Pakistan Housing Development Authority, is an organization which is dedicatedly working on these projects. So with all the construction background, I think the topic of today's webinar, which was selected as the recycle and reuse of construction waste, is an important aspect, not only to optimize the material, but also to protect our environment. With these opening remarks, I would once again like to thank you, and would love to listen to the experts about their views. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Now I would request Dr. Asadur Rahman. Sir, please take the floor. It's yours. Dr. Asadur Rahman, sir. Okay. Thank you, General Saab, for inviting me for the discussion. As the topic that I will be discussing on is the use of concrete aggregates in the structural concrete. As you have already mentioned in your remarks, that there's a rapid increase in the construction industry, the development of infrastructure, which has basically led to the increased burden on the natural resources. Especially if you think of concrete construction and reinforced concrete construction, the natural aggregates, definitely they are one of the main constituent of reinforced concrete construction. And with the increased construction, definitely the burden is there on the natural resources.
Normally, these aggregates are extracted from the mountains. With the increased load, natural aggregates, definitely this is going to develop the ecology and the environmental systems. So definitely there should be a solution for reducing the burden on the natural aggregates or the natural resource in general, and also to protect the environment. So for that one, definitely one solution is to use the concrete that can be obtained from the demolition of structures, reinforced concrete structures. There can be different other sources also, as you have mentioned. From the construction side, we can have the construction debris, but definitely they are not that mature that can be directly used. But something that is coming from the demolition, and the concrete has the age, it has already matured, and the strengths are there which can be utilized. The other definitely source is we don't expect to have them, or we don't basically pray to have them, is when we have some unfortunate events like earthquakes and or so many or these type of things. Because if God forbid something happens and the buildings are destroyed, then they also lead to the demolition, construction and demolition waste. So these are some sources from where construction and demolition waste uh, can be generated. The normal tendency is to put them somewhere to get rid of from where they have been demolished. Or majority of the time it's just to use is used as just like the backfill. But the concrete definitely, which consists of the cement and the aggregates and all the other things, do have its strength and do have characteristics that can be utilized. And if they can be uh, basically used in a certain manner, then they can be always used or recycled as the aggregates, as a replacement of the natural aggregates. Definitely, here I to say we can totally replace the natural aggregates, but definitely this is one of the solution, and the world is moving towards it. And actually, if you go for numbers, then what I can ये हमारा connection खराब हो गया। million tons, and in 2022 it is expected to increase up to so there has been tendency to go for the recycling, especially the European countries, and European Commission is very sensitive about it. They have some of the places they have made mandatory to recycle the demolished concrete and all those type of things, and to recycle them. So you also have to look in that dimension. And China has gone in use of the recycle in the demolished concrete and use of as a recycled concrete. I will just discuss. I have a chance to work with a university in Shanghai. Worked with them in collaboration on a project for 3 years, and I have a chance to visit China and especially Shanghai, and they have gone for construction of even multi-story high-rise buildings with the recycled aggregate concrete. So they have gone up to that far. But definitely we are not up to that stage, but definitely we can take steps. And the main obstacles that we can see in the use of recycled aggregates, one main is the variable in their properties, because this recycled concrete comes from different sources. Some can be low strength concrete, some can be normal strength concrete, some can be high strength concrete. So that's one major issue that has to be sorted out appropriately. Otherwise, this can lead to some different type of. There's a lack of confidence, lack of experience. In Pakistan, we don't have like the case studies on which we can rely how the recycled aggregate concrete
made up of recycled aggregates, be it under service loads, under ultimate loads. And definitely, we don't have the guidelines to use those recycled aggregates as a structural concrete. And plus, definitely, there can be different other issues like how far the demolition is to bring up to some point where from where the lumps of concrete can be converted into like aggregates through crushers and all those type of things. So these are some some issues, some obstacles that are there that needs to be addressed properly. Plus, if we look at the physical, pair the recycled aggregates with natural aggregates, then the first thing is the physical properties of the natural aggregates and the recycled aggregates. Definitely look for their crushing strengths, their abrasion values, and then physical characteristics like what absorption and all those type of characteristics. So if we compare them, then definitely these recycled aggregates coming from the demolished concrete, they do have inequalities compared to the natural aggregates. It's understandable, but they are not so infected just aggregates because if we just carry out the testings, then at least we find that they are within the limits provided by different testing societies like ASTM or AASHTO or BS standards. So they can be used, but definitely they have some inferior qualities as compared to the the natural aggregates in terms of all those characteristics that I mentioned. Plus, then let's say if we use them as the replacement in combination with natural aggregates, and in like some percent of natural aggregates and some replaced by the recycled aggregates. And if you look at the fresh properties of recycled aggregate concrete, then definitely almost the same as you have for the natural aggregate concrete. But definitely there are some issues of workability because of the flakiness indexes and all those type of things in the recycled aggregate concrete. The workability is a little bit of an issue, but that can be again solved. Then sorry, that can be solved basically using by some super plasticizers and the other things. The other thing that affect the fresh properties is basically the use of a higher water content, because they have higher absorptivity, and to bring those recycled aggregate, the surface dry soaked and do some other process to bring them at par with the natural aggregates in terms of the surface saturated surface dry conditions. So, and mixing and all those things. So these are some things that we that counted in the fresh properties of concrete, but again, still they can be addressed, and it's not a major issue. We cannot handle them on site. Then comes the hardened properties, which are more important. So the main property is definitely the compressive strength for concrete. So again, with partial substitution of natural aggregates with the recycled aggregates, the compressive strength do decrease. And if you increase the replacement, just let's say we start from 20, 50 and goes to 70 and total replacement, the decrease is almost linear. As you increase the recycled aggregates, the decrease in the compressive strength is almost linear in that trend. But if practically, if you look at the 20, 25, 30% replacements, the variation is not that much. So it means that at least we can have some partial replacement, and we can have some good characteristics in terms of compressive strength. Then definitely the concrete all makes intentions. The tensile strengths are also important. And again, they have a smaller tensile strength as compared to the natural concrete or natural aggregate concrete, but the angularity or the flakiness and all those things, sometimes they tends to help. And they sometimes when we get to a higher tensile strength, they're still a bit lesser, but not the variation is not that much as compared as to have in the compressive strength.
So that's a little bit of plus point in tensile strength, so that the cracking can be at a later stage as compared to if you go for the totally naturally aggregate things. Then definitely we also need the modulus and all those things. So the modulus of elasticity is affected in a similar way as the compressive strengths are affected. So as we increase the percentage of recycled aggregates, the modulus and those things are affected. So definitely they are going to affect overall behavior. The strain curves and the load deflection curves definitely became softer, and definitely we have, and the issues can be in the serviceability. Then another major important thing is the durability and the performance under different types of aggressive conditions, like how they behave against chloride in diffusion, carbonation, permeability, porosity. They do have a higher permeability and porosity as compared to the natural aggregates. And overall, if we look at the recycled aggregate concrete, they are more permeable as compared to the natural aggregate concrete. And again, that increases with the increase in the percentage replacement. So in the range of like 20, 25, 30%, that is manageable, that can be used. But definitely if for the larger replacements in like 50, 70, 100%, then definitely that becomes a issue. Can we have a durable concrete with that much percentage of replacement? And then the other thing is definitely still the full codes and standards are not available. There are some standards, I am talking internationally, which are available, but still there's a lot of things to be done. And even if we look at like ACI, the ROILEM, those FIBs, they have their working technical committees on the use of these recycled aggregate concretes, and they are still working. They are doing things to come up with some procedures and some things that can, and so that these recycled aggregates can be standardized and they can be properly used. The China that I have experienced, they have developed their codes and regulations, and they have gone a bit far in that particular case. So with all this, I would just like to brief about the research that we carried out at NED University of Engineering and Technology, that was in collaboration with Tongji University, Shanghai, and the project was funded by the Pakistan Science Foundation and the National Science Foundation China jointly. That was a 3-year project. The idea was to just first characterize whatever waste concrete is available in the vicinity of Karachi. So we collected the samples from different sites from where the concrete demolished concrete was dumped, and we characterized, and we again reached at the same conclusions that I've discussed in my earlier discussion, that the qualities of the recycled aggregate concretes were inferior as compared to the natural aggregate, but still they were within the limits. So we proceeded further with the for designing the mixes and coming up with appropriate design. And we were looking for a target strength of like 30 megapascals, 35 megapascals. And fortunately, we were able to achieve that with at least 30% replacement of natural aggregates with the recycled aggregates. And the strengths were in the range of mixed design. Definitely the water cement ratio was on the lower side to get the higher strength, but definitely the workability, other things were limited by the use of super plasticizers and the things. And we tested beams, columns, and frames to see how they behave. And one interesting thing was we look for tested both concrete and reinforced concrete. So in plain concrete, definitely the difference was very much there. But the presence of reinforcement, that was able to somehow overcome some deficiencies of the recycled aggregates. And the results, especially in terms of in case of beams, were not that
far away from what we were getting from the natural concrete. So it means that if the recycled aggregate, the reinforcement, then some of the deficiencies can be taken care by the provision of the reinforcement, especially if you look in the columns and the confinement provided by the reinforcement through the lateral ties and the other things. That was of a bit help to take care of the deficiencies of the aggregates. We were also able to reinforce concrete frames subjected to the seismic loading on shake tables, and the system that was designed was a strong column and weak beams, and we find out that if we are able to design the system with strong columns and weak beams, then the recycled aggregates still can perform better and they can be still utilized. Further, definitely, since we were not able to test some multi-story frame structures over there, so we cannot say confidently about how they are going to behave in the multi-story structures. But when we were visiting Shanghai, China, there we have seen that they have tested prototype multi-story structures and with on the shake tables, and they have some very good proofs. Even they have constructed 2 towers, similar specifications and everything, one with the natural aggregate concrete and one the recycled aggregate concrete, and they observing for last 4 years, and the performance are almost back over there. So this was our experience. Plus, definitely one more thing is to check the economic feasibility and environmental with sustainability. We also did some life cycle analysis and life cycle cost analysis, and both of them were encouraging. And when we worked out the cost, that was on the lower side as compared to the natural aggregate concrete. But again, that needs to be done in a very proper way. That cannot be done in just a. And as we saw in China, they have regularized it, they have centralized the things, and the things are very much in the check. It's not random, anyone can go and use the things, because that can lead to some catastrophe. So what we basically arrived at after the studies is that if we are to go for the recycled concrete or recycling of the concrete, it cannot be just at random. It has to be properly sort of standardized, properly legislated, properly defined how the things are going to be properly centralized. The waste needs to be collected at the place, characterized properly, separated properly to which source is coming, how they can be classified into different types of grade depending on the source of concrete, depending on the strengths of concrete, where they are coming. So that is something that needs to be taken care of before we can say, okay, we can just take the things and we can start using the recycled concrete as an aggregates in the structural concrete. Because if something, can you wind up? Can you wind up? But I'm just winding up. Okay, so that's something that needs to be looked into before we can just openly say, okay, we can use the recycled. So that's so much. Thank you, Dr. Asad. That was a detailed, exposition you had given, and you talked about these. The most interesting thing was that your own research project, which was jointly done by NED and Shanghai University, and which had encouraging results. And it is very interesting because I, as a layman, but may I ask one question here before we go to our Dr. Naseem? You are talking about the concrete. Can the steel bars be reused? Steel bars. We have not tested those things, but definitely that can be one more dimension.
Okay, because that is essential part when we are talking about concrete, because I have seen that in certain housing regulations, waste, they do concrete, not allow. you have reinforcement plus. Yeah, okay, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा ब्रिगेडियर डॉक्टर मोहम्मद नसीम बेग, सर, फ्लोर इज योर्स। Sir, thank you very much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum all. Thanks a lot, sir, to you and to the team of IIPS. So I am Director Consultancy for the last 3.5 years, as I have already told and you have mentioned too. Am I audible, sir? You are loud and clear. Please go ahead. Right, sir. सर शुक्र है आपने ये थोड़ा सा बीच में एक एडवांटेज दे दिया। आपने कहा कि यू कैन टॉक इन एनी लैंग्वेज, सो टॉकिंग ऑल द वे इन इंग्लिश मे नॉट बी पॉसिबल। तो अगर दरमियान में कोई थोड़ा सा उर्दू में स्विच लग जाए तो ठीक होगा सर। आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस फेवर सर। सर FW has its own consultancy directorate and we are actually dealing with all kind of projects, जिसमें कि अगर आप देखें 1966 onward, KKH वंडर ऑफ द वर्ल्ड कंसिडर टू बी, और उसके अलावा बाकी भी जो रोड्स हैं इसमें FW ने बहुत ज्यादा काम किया। We have diverse nature of projects and without going into the technical details, I'll just be covering something related to the asphalt pavement recycling, and in that too the reclaimed asphalt pavement, the RAP. Next. So there is some problem in sharing of the probably. Brigadier sir, we can see your presentation without it. Is it the second slide now, sir? The reclaimed asphalt. Right, yes, sir. Then I am on the slide, sir. It is the most efficient way of construction waste material reuse in the transportation sector. As Dr. Asad was talking about the concrete, I'll be just focusing on this asphalt pavement, reclaimed asphalt pavement. Then RAP is essentially old pavement asphalt mixed materials that is reclaimed, recycled for the new pavements, construction or rehabilitation. ये जो asphalt pavement या ये black top roads की होती है, ये after few years अगर आप देखें तो इसमें cracks develop हो जाते हैं, पुरानी हो जाती है, ruts develop हो जाते हैं। तो या तो आप इसको totally remove करते हैं और उसके बाद नई डाल देते हैं, या फिर इसके ऊपर ही अगर कोई cracks कम हो तो एक और layer डाल दी जाती है, जो कि normal पाकिस्तान में practice है। अगर इसको ऊपर से milling करके top wearing course अगर मिलिंग करके उसको निकाल लिया जाए, जैसे कि अक्सर किया जाता है प्रोजेक्ट्स में, तो उसका जो मटेरियल है दैट कैन बी रीयूज्ड इंस्टेड ऑफ डूइंग द लैंडफिलिंग और वेस्टिंग। In its most common form, it is collected in loose granule form as a byproduct of pavement rehabilitation or reconstruction after the milling operation. The pavement milling operation, as you could see, a milling machine, then a dumper. The material is taken to the plant or to the dumping site. The RAP is actually, it has three methods. One is the hot recycling at plant, then hot in-place recycling, and cold in-place recycling. Hot recycling is that hot mixed asphalt recycling is the process in which the reclaimed asphalt pavement or the RAP materials are combined with the new material to produce the hot mix, HMA mixtures. The mix, placement and compaction equipment and procedures are the same as for the regular hot mix asphalt. Typically 10 to 30% by weight of aggregate, the RAP is used in the recycled hot mixes. Now this is a picture of the plant which is showing the fresh material and the reclaimed or the recycled asphalt pavement material.
You could see the fresh material is a bit, it's a bigger in size, 60 to 70%, and the wrap material is almost 20 to 30%. The plant which is Aztec 6-pack used for the wrap-based asphalt preparation, it is normally used in Pakistan also. Wrap as a constituent in hot mix asphalt. It is the most common wrap used. The new HMA is produced at a batch plant to which a predetermined percentage of wrap is added. That is according to the formula, the JMF, or as Dr. Asad was saying, we don't have the standards, but we just have the experiments which we do carry out in our institutions. And the NUST is actually taking the lead in it. And I have few names with me, the Brigadier Dr. Irfan, Brigadier Dr. Sarfraz, and Brigadier Dr. Bilal. When they were in the NIT, actually, they developed the job mix for this wrap we use in the M2 and the other projects. There's an ample evidence that HMA which incorporates the wrap performs at least as well as HMA without the wrap. यानी कोई उसमें खास फर्क नहीं पड़ता. अगर कोई पढ़ेगा भी तो 90-95% रिजल्ट्स इसके बेहतर आते हैं. The benefits of wrap use are twofold. The wrap aggregates can be used in place of a portion of the virgin aggregate, which lowers the cost and reduces the waste. The wrap asphalt binder is reheated and used in place of a portion of virgin asphalt binder, which lowers the cost and reduces the waste. In place HMA recycling. It involves the reusing existing pavement material on site as part of the construction project. There are two major techniques for in-place recycling of the asphalt pavement. One is the hot in-place recycling, and the second one is cold in-place recycling. Each of these approaches uses its own equipment train to recover and recycle the existing pavement material as part of the paving process. The HIR, hot in-place recycling process, employs the specialized form of mobile asphalt plant set up to work in a continuous train with a standard paver and compaction equipment. The pavement is heated and existing surface layer is removed by milling. The virgin aggregate or the plant mixed asphalt is then processed and mixed with the wrap material. Finally, the mix containing the recycled material is laid and compacted. A few of the pictures showing it, that is preheating unit. If you could see the red flame showing this scarifying and the heating unit on the right side, and a plant, hot in place recycling plant on the side. Another photograph showing the same process. Then is the cold in place recycling, or the CIR. Essentially pulverizes the existing pavement structure to a predetermined depth, adds a binding agent such as the asphalt emulsion, then lays and compact the resulting product for use as stabilized base course after the appropriate mixing. Sorry for using the technical terms, but I can't escape these terms. That is stabilized base course. To the engineers, it's very common. This is a technical webinar, and please Sir. use, because there are a number of students who are now watching you. So you can cut me out as a layman, no problem. You can use as many technical language. Sir, thank you very much, sir. I have tried my best not to use. I'm not going into the very detailed like JMF and etc. But I'm trying to explain it in a very common way. So this for the engineers, at least those who have graduated from the universities. Incidentally, I'm teaching the advanced structural materials at the National Institute of Transportation to the MS class also, sir. So this base course is even paved over with an HMA surface course.
Now you could see the cold in place recycling process. The benefits of asphalt concrete recycling. Reuse and conservation of natural resources. As we all know that we have very limited natural resources, and and again the saving of this material is enormous. I'll show you a few of the numbers also, that how much saving can be done by reusing these materials. Then the preservation of environment and reduction in the landfilling. What we do right now is कि जो भी निकलता है टॉप से asphalt, उसकी वेरिंग कोर्स हो या बेस कोर्स हो, उसको उठा के साइडों पे फेंक दिया जाता है. अगर दरिया के साथ है तो दरिया में फेंक दिया जाएगा, अगर कोई साथ और जगह आ रही है तो उसमें फेंक दिया जाएगा, और कुछ नहीं तो भराई के काम पे लगा दिया जाएगा. So actually we are wasting that material. Then the energy conservation and shorter construction periods. Cost saving is 30 to 50% as compared to the conventional pavement rehabilitation or the construction methods. Historical use of RAP in Pakistan, and surprisingly, it's not new in as far as the RAP use in Pakistan. We have been using it, but maybe we are not using it at a larger scale, और इतना common नहीं है कि हर जगह पे use कर लिया जाए. कोशिश यही होती है कि अक्सर लोगों की और अक्सर कॉन्ट्रैक्टर्स की भी कह लें कि नया मटेरियल यूज किया जाए. कौन इस रोले में या बखेड़े में पड़े कि पुराने मटेरियल को उठाएं, पहले उसको क्रश करें और उसके बाद रीयूज करें. In the Pakistan, HIA techniques was employed for the first time on Lahore Islamabad motorway M2 in 2006, and in that Lahore Kala Shah Kaku section. The purpose of this project was to rehabilitate the sections of M2 to a depth of 38 to 50 millimeter. So all engineers, they know that this is actually the wearing course. उसकी कई जगहों पे जगह thickness उसकी 38 mm थी और maximum 50 mm तक ले की जाती है. तो या तो उसको completely remove कर दिया गया, उसका loose portion को हटा दिया गया और उसकी जगह पे रैप लगा दिया गया. The project being first of its kind, performance evaluation was conducted to evaluate the effectiveness of this technique on motorways. Based on the results of test, recycled asphalt pavement was observed to be adequately crack and rut resistant in the field. CIR was used in N5 near Gujranwala. Excuse me. Now, few of the pictures on M2. M2 is from Lahore to Islamabad. You could see one lane is on the extreme lane, it is being used. This is Pakistan. Cold recycling at Gujranwala Kharian. Gujranwala Kharian on GT road. If you could see the 10 centimeter. Again, some pictures showing the cold recycling. The few examples on the FW project. In 2015-16, during the rehabilitation of M2, the plant produced RAP-based asphalt was used in the pavement rehabilitation. RAP was used in the pavement construction in the first section up to 120 kilometers, Lahore to Pindi Bhatia on both sides being northbound and southbound. Following percentages of RAP by weight of aggregate were used in the project: asphalt wearing course and asphalt base course. और इससे पहले जो तीन नाम मैं मेंशन कर चुका हूँ, तीन डॉक्टर साहबान के, NUST के, NIT के, they actually made the JMF and they did a lot of work for this rehabilitation work. Wearing course में 15% और asphalt base course में 30%. The recent is the Lahore Sialkot motorway or the LSM.
The plant-produced RAP-based asphalt was used in the initial 10-kilometer section of LSM in pavement construction on both sides. 20% by weight of aggregate RAP was used in the asphalt base course, and RAP material of M2 rehabilitation project was used. यानी जो मटेरियल हमारे पास वहां पे बचा हुआ था उधर सारा तो नहीं इस्तेमाल हो सका, अभी भी हमारे पास कुछ वहां पे मौजूद है, उस रैप के मटेरियल को यहाँ पे उठा के लाया गया और दोबारा यूज किया गया, क्योंकि ये नई सड़क थी लाहौर सियालकोट मोटरवे, यहाँ से फिर हम इसको लेके आए लाहौर सियालकोट मोटरवे के लिए. Again, the other project is Lahore Ring Road project. The plant-produced RAP-based asphalt was also used. It is one of the longest length of RAP-based pavement construction in Pakistan, probably. And the percentage for RAP by weight of aggregate were used in wearing course 25% and base course again 25%. In this project too, the RAP material of M2 rehabilitation project was used. The average saving, as I say, for maybe 1 or 2 weeks back, I just asked one of my PhD in transportation, Dr. Saab, to calculate that how much saving which we could do by using the 15% of the wearing course material and in 30% of the asphalt base course. And it surprisingly, it is 0.5 million per lane per kilometer. Per lane is, as we being engineers all know that it is 3 meter plus, and then rupees 1.5 million per lane per kilometer. If it is, again, if you'd see, it's 1.5 million per kilometer per lane. And that's all, sir. Thank you very much. Thank you, Dr. Naseem. That was a wonderful presentation you made. And I'll just give you the background how I contacted Dr. Naseem when this M2 was being done between, it was the top was being relayed. Excuse me. I happened to be traveling and I saw that there is some kind of milling going on. They are scrapping off the top and then they are milling and they are reusing. That just kept in my mind and I kept working on this. So when we were carrying out this research, I tasked my the researcher. I said, please do see how that it's related to transportation engineering and how they did that. And that is wonderful thing you have done. What has intrigued me here more is that you have a linkage with NUST, that is that you are a company, you build, and you have a linkage, your industry, you have a linkage with academia. So which enables you to have 3 facilities. One, you carry out research. This is based on your own research. Second is that you have your own testing facilities. And thirdly, you have said that you have not standardized, because I think standardization would take a lot of work on this. And may I suggest a very, very humble suggestion that you can follow this model of NED and Shanghai University collaboration, that maybe we can, because China has gone far ahead in recycling the waste. We are proud of you, of our FW, frankly, because FW is an agency, is a company which goes in the far-flung areas, disturbed areas where nobody else can go. And they have done wonders for Pakistan. Proud to have you serve with us. Thank you very much. Very kind. Thank you, sir. Okay. And now I would request next speaker is Dr. Shahid Mahmood. Dr. Saab, welcome. And he is going to speak on current awareness and trends regarding construction waste in Pakistan. Sir, floor is yours. Thank you, General Saab. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
I will talk about current awareness and trends regarding construction waste in Pakistan. There are various sizes and kinds of projects being executed in private sector, in public sector, and even domestic at domestic level. छोटे घर हैं, private buildings हैं, and the public sector projects. Everybody is generating construction waste, and everybody is disposing of and carrying out management according to their own convenience. कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है, तो वो जहाँ जिसका जैसे उसको कन्वीनियंट लगता है वैसे उसको अपना मैनेज कर लेता है. तो इसके ऊपर मैं आगे डिस्कस करूंगा. पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997 वेस्ट को इस तरह से डिफाइन करता है कि वेस्ट मीन्स एनी सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट which has been, is being, or is intended to be discarded or disposed of, and it includes liquid waste, solid waste, waste gases, suspended waste, industrial waste, agriculture waste, nuclear waste, municipal waste, hospital waste, used polythene bags, and residues from the incineration of all type of waste. बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि इस वेस्ट के अंदर उन्होंने कंस्ट्रक्शन वेस्ट को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, ना उसको डिफाइन किया है. Now, what is construction waste? It is the waste generated by activities during the construction. Construction means कि न्यू कंस्ट्रक्शन है, नई बिल्डिंग बन रही है, नई रोड बन रही है, ब्रिजेस बन रहे हैं. रेनोवेशन, पुरानी बिल्डिंग को रेनोवेट किया जा रहा है. And demolition of buildings, roads, bridges, and landscape, such as scraps, debris, damaged, spoiled materials, unserviceable materials, temporary structures, packaging materials, and waste generated by workforce due to negligence. The workforce है वो भी materials ज़ाया कर देती है due to negligence या poor training की वजह से या उनको ownership नहीं होती तो वो materials ज़ाया करते हैं. कंस्ट्रक्शन वेस्ट की 3 कैटेगरीज हैं. एक है कटिंग वेस्ट जो कि काटने में, डिसमेंटलिंग में जनरेट होती है. कंक्रीट ठीक से नहीं की, तोड़ दो जी, कंस्ट्रक्शन वेस्ट हो गई. टाइलें लगाते हुए उसने मेसन ने सही से टाइलें नहीं लगाई, वो टाइलें तोड़ दी, उसकी कटिंग ज्यादा कर दी, उसको सही से लगाया नहीं, रिजेक्ट हो गई, तोड़ दो जी, दोबारा से लगाओ, कटिंग वेस्ट हो गई. एप्लीकेशन वेस्ट है. एप्लीकेशन वेस्ट में मटेरियल सही से नहीं इस्तेमाल किया जा रहा तो उसके अंदर वेस्ट हो जाती है, तो मटेरियल वेस्ट हो जाता है. प्लास्टर हो रहा है, एक्स्ट्रा मॉर्टर बना लिया, इस्तेमाल हो गया, बाकी फालतू बच गया, डिस्पोज ऑफ कर दो जी. कंक्रीट ज्यादा बना ली, ज्यादा बन गई, डिस्पोज ऑफ कर दो. वुड के अंदर बहुत ज्यादा वेस्टेज होती है, 35% वेस्टेज वुड के अंदर होती है, उसके एस्टिमेट में लिया जाता है 35% वेस्टेज. ट्रांजिट वेस्ट एंड थेफ्ट एंड वैंडलिज्म, पूर हैंडलिंग के दौरान मटेरियल वेस्टेज हो जाती है. ईंटें आई हैं ट्रक में, उसको अनलोड करते हुए 10% टूट गई, 15% टूट गई, ब्लॉक अनलोड हो रहे हैं, टूट गए, they go to waste. The waste can also be classified into construction, demolition, civil work and renovation work. अब इसके रीजंस क्या होते हैं? पुअर और मल्टीपल हैंडलिंग. मटेरियल आया, उसको अनलोड सही तरह से प्रॉपरली नहीं किया जा रहा. एक जगह अनलोड करके उसको उठा के दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, जहाँ पे उसकी जरूरत थी वहां पे अनलोड नहीं किया गया, उसके दौरान मटेरियल डैमेज होता है, वेस्ट होता है. पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क, काम ठीक से नहीं होता, उसको रीडू करना पड़ता है तो उसमें वेस्ट हो जाती है. रिमूवल ऑफ ओल्ड अनवांटेड स्ट्रक्चर्स एंड रिकंस्ट्रक्शन. पुअर स्टोरेज, सीमेंट आया है, उसको सही तरीके से स्टोर नहीं किया, बारिश हुई, पानी लग गया, सीमेंट खराब हो गया. लैक ऑफ ट्रेनिंग, लोगों को पता ही नहीं है कि मटेरियल को हैंडल कैसे करना है. ट्रेनिंग प्रॉपर दी जाए तो मटेरियल की सेविंग हो सकती है. ओवर ऑर्डरिंग ऑफ मटेरियल्स, 4000 क्यूबिक मीटर सैंड चाहिए, 4500 मंगा लिया, वो फालतू पड़ी हुई है, वो वापस नहीं जाती, वो वहीं पे वेस्ट हो जाती. इस तरह और दूसरे मटेरियल भी हो सकते हैं. डैमेज टू मटेरियल्स ड्यूरिंग डिलीवरी. डिलीवरी जैसे पहले हैंडलिंग के अंदर वो लोडिंग अनलोडिंग के अंदर मटेरियल्स डैमेज हो जाते हैं,
और इस्तेमाल के काबिल नहीं होते। मटेरियल वेस्ट के अंदर कौन कौन सी मटेरियल आते हैं? कंक्रीट हो गई, सीमेंट मोटर्स हो गए, वुड हो गई फ्रॉम बिल्डिंग्स, न्यू कंस्ट्रक्शन में, पुरानी में जो वहां से रिकवर हुई, एसफॉल्ट होगी रोड से, वाटर प्रूफिंग की वो रिमूव की जाती है छतों से रीडू करने के लिए, जिप्सम शीट्स हो गई, ग्लास वूल इंसुलेशन है, एयर कंडीशनिंग, मेटल्स हो गए, स्टील बार्स हो गई, लेड हो गया, एल्यूमिनियम, कॉपर बिल्डिंग के अंदर वायरिंग के अंदर इस्तेमाल होता है, ब्रिक्स हो गई, कंक्रीट ब्लॉक्स हो गए, स्टोन हो गए, ग्लास, प्लास्टिक्स, पीवीसी, salvage building components, doors, windows, plumbing fixtures, electrical wiring, conduits, जगह को साफ करने के लिए, क्लियर करने के लिए, trees, stumps, earth, rock from clearing of the site. Construction में hazard materials भी encounter होते हैं। तो पाक EPA hazardous material को इस तरह से define करता है, that is hazardous or contains a hazardous substandard or which may be prescribed as hazardous waste, and it includes hospital waste and nuclear waste. उन्होंने specifically दो को उन्होंने identify किया है कि जो कि entirely they are hazardous. Handling of hazardous substances subject to the provisions of this act. No person shall generate, collect, consign, transport, treat, dispose of, store, handle or import any hazardous substance. अच्छा, उसके अंदर उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि हैजर्डियस मटेरियल को हर कोई उसको हैंडल भी नहीं कर सकता। उसके लिए उनको अपने आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, तब वो हैजर्डियस मटेरियल को हाथ लगा सकते हैं, उसको डिस्पोज कर सकते हैं। उसके प्रोटोकॉल्स हैं कि कैसे उसको डिस्पोज ऑफ करना है। अब इसके अंदर फिर वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल को अलग से कोई उसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया, लेकिन उसके अंदर हैजर्डियस मटेरियल एनकाउंटर होते हैं। Hazardous materials, so long as they are not used with their remaining in packing, they are incorporated in the building, they are not that much hazardous. Once they it become byproduct of a project in form of debris or trash, it then becomes hazardous waste. Asbestos तोड़ दिया है, अब वो पड़ा हुआ है, डस्ट उसके पार्टिकल्स उठते हैं, डस्ट एंड दैट इज हैजर्डियस। लेड हो गया, मरकरी हो गया, हैजर्डियस कहलाती हैं। जैसे एस्बेस्टस कंटेनिंग मटेरियल्स, पाइप्स होते थे, किसी जमाने में यूज होते थे, अब वो इस्तेमाल नहीं होते। ट्रीटेड वुड, ग्लास, प्लास्टिक कंटेनिंग डेंजरस सब्सटेंसेस, कंटेनर जिसके अंदर वो हैजर्डियस लिक्विड्स स्टोर किए होते हैं। बिटुमिनस मिक्सचर्स कंटेनिंग कोल tar, ऐसे मटेरियल्स जो कि डिजॉल्व होके जमीन के अंदर जज़ब हो जाएं और पानी को कंटेमिनेट करें या अर्थ सॉइल को कंटेमिनेट करें। मेटल्स कंटेनिंग डेंजरस सब्सटेंसेस, केबल्स contaminated with oil, coal tar and other dangerous substances. Mercury containing light bulbs, switches and relays, rubble containing dangerous substances. Unused and unset cement may be hazardous. Gypsum plasterboard containing hazardous material. Paints, varnishes containing organic solvents or other dangerous substances. पेंट, वार्निश, रिमूवर, फालतू क्वांटिटीज बच गई हैं, उसको सही तरीके से डिस्पोज नहीं करते या संभालते नहीं, गिर गया, जमीन में जज़ब हो गया। Adhesives and sealants containing organic solvents and other dangerous substances. Empty packaging containing with residues of dangerous substances. Paint cans, aerosol cans, intermediate bulk containers, drums वगैरह, ये इनको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाता। ये कबाड़िया को दे देते हैं, कबाड़िया क्या करता है, उसको खाली करता है, उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं और वो उसको जो मेटल है उसको वो रिसाइकल के लिए भेजता है। अब इफेक्ट्स क्या होते हैं हैजर्डियस मटेरियल के? इफ नॉट केयरफुली मैनेज्ड, दीज मटेरियल्स कैन बी ऑफ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ, वाइल्ड लाइफ, फेंक देते हैं जंगलों में, फ्लोरा एंड फोना, जहाँ पे मटेरियल्स गिर गए, जो लिक्विड्स थे, वहाँ पे फ्लोरा एंड फोना इफेक्ट होता है, उसकी फर्टिलिटी इफेक्ट होती है। सरफेस एंड अंडरग्राउंड वाटर इफेक्ट होता है, एनवायरनमेंट, एयर क्वालिटी इम्पैक्ट होती है, और वेजिटेशन और क्रॉप्स पे इसका इफेक्ट आता है।
अब उसकी जो रेगुलेशंस हैं हमारी पाकीपीए की, वो क्या कहती हैं? वो मैं इसमें दो हैं जो शायद लिंक करती हैं उससे, वो मैंने रिप्रोड्यूस किए इसके अंदर। इसके 97 का जो पाकीपीए का एक्ट है वो कहता है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, एयर, वाटर एक्सेट्रा, एंड इट डील्स विद, ये जो 97 का एक्ट है डील्स विद द म्युनिसिपल, हॉस्पिटल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, हैजर्डियस वेस्ट, organic and inorganic matter, and organism buildings. All social and economic conditions affecting and waste management plan pertaining to hazardous waste. इसमें भी क्लियरली वो कंस्ट्रक्शन वेस्ट के मैनेजमेंट के बारे में कोई ऐसी कोई गाइडलाइंस इसके अंदर नहीं है। अब जो करंट ट्रेंड्स हैं पाकिस्तान में के वेस्ट को हम किस तरह से हैंडल करते हैं, एक उसमें हम सॉर्टिंग करते हैं, इसके ऑर्गेनाइज नहीं है लेकिन वो स्कैवेंजर्स कर लेते हैं या खुद थोड़ा बहुत कर लेते हैं। ब्रिक्स, बैट्स, कंक्रीट ब्लॉक्स को उसमें से जो रबल है रिमूव कर लिया जाता है, वुड एंड प्रोडक्ट्स रिमूव हो जाती है, मेटल हो जाता है, इसकी रिसाइकलिंग होती है। पीवीसी प्लास्टिक्स जो उसमें से कबाड़िए हमारे वो हैं मेन सोर्स ऑफ रिसाइकलिंग। स्टील है, स्टील के पिलर बन जाता है, उसका रीबार हो जाता है। एग्रीगेट को इतनी एक्सटेंसिव उसकी रिसाइकलिंग नहीं है लेकिन उसको वो लैंडफिल्स में या अगर उसको उसका साइज छोटा है तो सब क्लोज के अंदर उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। एसफॉल्ट जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब ने बताया कि एफडब्ल्यू का वेरी लिमिटेड यूज है उसका। वुड अगर साफ हो तो उसका चिप बोर्ड वगैरह बन जाता है, या उसके उसका अगर साइज अप्रोप्रिएट हो तो वो वुडन डोर्स होते हैं उसके अंदर, पैनल डोर्स के अंदर फिलिंग के तौर पे भी इस्तेमाल हो जाता है। फिर जो बच जाता है दैट गोज टू द लैंडफिल साइट, वो भी कोई प्रॉपर डेजिग्नेटेड लैंडफिल साइट्स नहीं है, इसलिए इलीगल डंपिंग हो जाती है, जहां जिसको जो कन्वीनियंट लगता है छुप छुपा के तो वो फेंक के वो आ जाता है। अब ये सॉर्टिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन वेस्ट देखिए कि इसके अंदर हमें बहुत सारे ऐसे दुकानें मिलती हैं, सेंटर्स बन गए हैं कि जहाँ पे जो पुरानी बिल्डिंग से रिकवर होती हैं, खिड़कियाँ, दरवाजे, ईंटें और इस तरह के स्टील सेक्शंस वगैरह वहाँ पे वो मिल रहे होते हैं। दिस इज रिकवर्ड मटेरियल या सॉर्टिंग करके उसमें से निकाल लिया जाता है। अगर साइंटिफिकली इसको किया जाए तो वहाँ साइट के ऊपर हर मटेरियल के लिए अलग अलग बिन रखे जाते हैं जिसके अंदर वहीं पे सॉर्टिंग करके तो उसी जो कंटेनर है उसके अंदर वो मटेरियल डाल दिया जाए तो सॉर्टिंग करके मटेरियल को हम रिड्यूस कर सकते हैं कि जो कि उसमें जाएगा लैंडफिल साइट। रिसाइकलिंग के अंदर है कंक्रीट एंड ब्रिक्स है। ब्रिक्स को नॉर्मली क्या करते हैं कि उसको जो घरों में क्या होता है कि वो उसको मिस्त्री तोड़ ताड़ के तो ब्रिक बैलेस्ट बना लेता है और वो सब फ्लोर्स में इस्तेमाल हो जाता है। एस्फाल्ट का जैसे बताया ब्रिगेडियर साहब ने कि वो सम परसेंटेज ऑफ रिकवर्ड एस्फाल्ट इज यूज्ड इन न्यू रोड्स। फिर पीवीसी को दोबारा से क्रश करके उसका वो दाना बन जाता है, दोबारा उससे नई प्रोडक्ट्स बन जाती हैं। स्टील रिइंफोर्समेंट बार्स रिसाइकल हो जाती है, उसका फिर से बिलेट बन जाता है। वुड कि अगर तो साफ है तो वो अच्छे पर्पज के लिए इस्तेमाल हो जाएगी, वरना इट इज फ्यूल जो कि जलाने के काम करता है। फिर इलीगल डंपिंग है, अब क्योंकि वो कोई डेजिग्नेटेड हमारी लैंडफिल साइट्स नहीं है तो क्या होता है जिसको जहाँ कन्वीनियंट लगता है वो वहाँ फेंक आता है। अब इस्लामाबाद के अंदर नाले हैं और डिप्रेशन हैं तो वो अक्सर ये ऑपरेशन रात को करते हैं और छुट्टी वाले दिन करते हैं। तो जो छोटे घर हैं इस तरह के वो जाके वहाँ फेंक आते हैं। ये दरमियान वाली तस्वीर देखें, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, ये ऊपर की जो सेंटर की तस्वीर है ये हांगकांग की है कि वो हांगकांग में भी ऐसा होता है कि वो भी ऐसे वो ग्रीन एरिया हुआ छोटा सा वो तो आइलैंड है उसके अंदर तो लैंडफिल साइट पता नहीं कहाँ होगी, वहां पे भी ये काम होता है। वो देखिए वहां उसमें फेंक दिया, उसके नजर आ रहा है, वुड भी नजर आ रही है इस तरह। अब इसकी कंपोजिशन क्या है जो हमारी कंस्ट्रक्शन वेस्ट, इसमें जो पुराने घर होते हैं उसकी डिसमेंटलिंग ज्यादा इन्वॉल्व होती है। उसके अंदर कंक्रीट एंड मॉर्टर की परसेंटेज 53% है और सॉइल 22% है। 75% जो है ना यही मटेरियल्स होते हैं। बाकी वाइट सिरामिक्स हो गई, टाइलें हो गई, ईंटें हो गई, प्लास्टिक हो गया, रॉक हो गया, अदर मटेरियल्स। तो 75% जो पुरानी जो बिल्डिंग होती है वो जाता है उधर लैंडफिल।
अब जो नई कंस्ट्रक्शन होती है उसके अंदर दूसरे कंपोनेंट्स ज्यादा होते हैं मटेरियल के, उसके मटेरियल वेस्टेज, उसमें ब्रिक्स होगी, कंक्रीट होगी, मेटल हो गया, वुड का जैसे हम बताया 35% वेस्ट होता है वर्किंग के अंदर ज़्यादा हो जाता है, प्लास्टर बोर्ड हो गया, ग्लास हो गया। अब इसके अंदर जो सॉइल एंड एग्रीगेट्स की जो वेस्टेज है वो 44% है, जो कि रिसाइकल नहीं होता तो उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। अब कंस्ट्रक्शन वेस्ट मैनेजमेंट के क्या कंपोनेंट्स हैं, एक क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? पहला है रिड्यूस, क्या आप वेस्ट होने ही ना दें, मिनिमम वेस्ट प्रोड्यूस करें, एफिशिएंटली आप मटेरियल्स को यूज कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं और उसकी एप्लीकेशन अच्छे तरीके से करेंगे, रीडू ना करना पड़ेगा। अगर कोई वेस्ट हो भी गया है तो ट्राई टू रीयूज इट, उसमें उसकी सॉर्टिंग करके उसमें से यूजफुल मटेरियल है उसको निकाल लें और उसको रीयूज कर लें, उसको अगर रिपेयर को इन्वॉल्व है कर लें, उसकी रिसाइकलिंग कर लें, जो रिसाइकलेबल मटेरियल है, उसके बाद जो रेजिड्यू बचता है उसको हम डिस्पोज ऑफ करें, तो इट विल क्रिएट वैल्यू फॉर द प्रोजेक्ट, उसकी कॉस्ट रिड्यूस होगी, इट विल रिड्यूस द कार्बन एमिशंस, इट विल बी गुड फॉर द एनवायरनमेंट। इससे और रिसाइकलिंग से जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं कि एक नए बिजनेस एवेन्यूज ओपन अप होते हैं रिसाइकलिंग के लिए। बेनिफिट्स ऑफ रिड्यूसिंग एंड रिसाइकलिंग वेस्ट, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जैसा भी डिस्कस किया कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएटेड and an increase in economic activity in the recycling industry, reduction in building project expenses, donation of recovered material to charities, bringing tax benefits. अब वो नई बिल्डिंग बना रही, पुराना जो मटेरियल इस्तेमाल उसमें से रिकवर हुआ वो नॉर्मली इसके अंदर यूज नहीं करते हैं तो उसको लोग बेच देते हैं, तो चैरिटीज को भी दिया जा सकता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आल्सो कम्स डाउन, कि नया मटेरियल लाने की जरूरत कम है, fewer disposal facilities and environmental issues. इससे हमारे जो लैंडफिल साइट्स ऑलरेडी लिमिटेड हैं, ये है ही नहीं, तो हम उसको भी सेव कर सकते हैं कि हमें कम मटेरियल लैंडफिल साइट पे भेजना पड़े। कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ न्यू मटेरियल्स, पुराने मटेरियल्स को हम यूज करेंगे तो नए मटेरियल्स के सोर्सेज के ऊपर लोड कम होगा। कंप्लायंस टू एनवायरमेंटल लॉज हम इसमें इंश्योर कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द वेस्ट। हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी, एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो हाई स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी होगा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हमारी कि हम एनवायरनमेंट को सेव करें और अपने नेचुरल रिसोर्सेज को हम सेव करें। इम्प्रूव्ड कंपनी रेपुटेशन, जो कंपनीज रिसाइकलेबल मटेरियल करती हैं या एनवायरनमेंट का ख्याल रखती हैं, उनकी रेपुटेशन अच्छी कंसिडर की जाती है। प्रोजेक्ट पे अगर प्रोजेक्ट वाइड अगर अवेयरनेस हो कि हमने वेस्ट को रिड्यूस करना है तो उस पर एम्प्लॉइज के ऊपर भी एक अच्छा इम्पैक्ट आता है, दे वर्क विद बेटर डिसिप्लिन। लेबर को भी अगर पता हो कि मैंने मटेरियल को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है, उसको मुझे अकाउंटेबिलिटी होगी अगर मैंने मटेरियल वेस्ट किया। अब ये मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हैं। अब जो ये कंस्ट्रक्शन है डेमोलिशन वेस्ट कि ये साइट के ऊपर अगर उसको हम सॉर्टिंग कर लें, मेटल अलग कर लिया, वुड, मैसनरी, कार्डबोर्ड, और जो रिमेनिंग मटेरियल है वो डिस्पोजल की बचता है, तो बहुत कम हमें जगह चाहिए लैंड फिल के अंदर। दूसरा है कि साइट के ऊपर इतनी जगह नहीं है कि आप वहाँ इतने कंटेनर्स रख सकें जिसमें आप सॉर्टिंग कर सकें, तो एक ही कंटेनर के अंदर डाल दिया और वो ले जाके उसको अवे फ्रॉम द प्रोजेक्ट साइट उसकी वहाँ पे सॉर्टिंग कर ले, तो उसमें भी सारे मुश्किल होता है कि सारे पूरे के पूरे वेस्ट को आप खंगाल के चीज़ें निकालें, तो उसमें से मोटी मोटी चीज़ें निकाली, बाकी वेस्ट में चला गया लैंडफिल में, इसमें कुछ ज़्यादा मटेरियल में वेस्ट करना पड़ता। तीसरा है कि हम कुछ भी ना करें और उसके अंदर सारे के सारे को लैंडफिल पे फेंक। तो फर्स्ट स्टडी इज द प्रेफर्ड वन। अब इसका कॉस्ट का क्या इफेक्ट होता है जो कंस्ट्रक्शन वेस्ट होती है? हमारे जो मोस्ट ऑफ दी प्रोजेक्ट्स जो हैं दुनिया ऑल ओवर द वर्ल्ड 90% जो होते हैं वो कॉस्ट ओवररन में जाते हैं या उसका शेड्यूल डिले हो जाता है। ये इंटरनेशनल क्या कहते हैं कि रिकग्नाइज्ड फैक्ट है कि 20 to 30% ऑफ द बिल्डिंग गोज इनटू वेस्ट। मेरा पीएचडी में भी यही टॉपिक था, तो मैंने पाकिस्तान में 2 प्रोजेक्ट्स पे किया था, तो उसमें 22% के करीब मैंने वेस्ट
मैंने मेजर की थी। तो इस तरह वर्ल्ड वाइड 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स की वेस्ट जनरेट होती है। अब 2022 का जो एस्टीमेट है 12.7 ट्रिलियन के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होंगे। अगर हम इस क्राइटेरिया पे जाएं 22 से 30% वेस्ट होगा तो वी विल बी हैविंग ए वेस्ट ऑफ 3.17 ट्रिलियन डॉलर्स। अब कॉस्ट ऑफ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नॉर्मली नॉट मेजर्ड ऑन प्रोजेक्ट्स। अब ये जो वेस्टेज हो रही है इसका कॉस्ट कोई भी किसी प्रोजेक्ट पे मेजर नहीं कर रहा होता, वेस्ट हो गया फेंक। अब वो किसी से अगर पूछे भी ना, किसी बिल्डर से आपको क्या ख्याल है कितनी वेस्टेज हो रही है, वो कहते हैं 4-5% होगी। कभी आपने मेजर की है? वो कहता है जी नहीं मेजर कभी नहीं की। अगर वो मेजर करे तब उसको पता चले कि कितने उसके रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। अब वेस्टेज में सिर्फ मटीरियल ही नहीं होता, उसके अंदर लेबर भी वेस्ट हो रही होती है। लेबर अगर आइडल बैठी हुई है, कोई एक मटेरियल नहीं आया या रीडू करना पड़ गया, एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ गया, दैट इज आइडल लेबर टाइम। मशीनरी खराब है, मशीनरी टाइम पे नहीं पहुंची है, लेबर बैठी हुई है, उसकी वजह से जो टाइम वेस्ट हो गया। कंक्रीट होनी है, सारी लेबर बैठी हुई है, बैचिंग प्लांट खराब हो गया और वो एक पुर्जे की वजह से खराब है, टाइम वेस्ट हो गया। ये सारे वेस्टेज में जाते हैं। अब इसको सारे को काउंट करें तो इट इज मोर देन 25% वेस्टेज ऑन प्रोजेक्ट्स। अब रीजन ऑफ फ्री वर्क एंड वेस्टेज क्या हो सकती हैं? पुअर प्लानिंग, पुअर एग्जीक्यूशन, पुअर क्वालिटी ऑफ HR वर्कमैनशिप एंड पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क प्रोसेस। अब इस पे जो मैंने PhD में एक रिसर्च की थी, मैंने उसकी एक स्लाइड यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि उसके अंदर जो मैंने कहा कि मटेरियल वेस्टेज होती है, इसके अंदर मशीनरी वेस्टेज होती है, लेबर वेस्टेज होती है, टाइम वेस्टेज होती है। इनको अगर हम कॉस्ट टैग इसके ऊपर लगा दें कि मटेरियल वेस्टेज इतने डॉलर की हुई, मशीनरी इतने की हुई, लेबर इतने की हुई, टाइम वेस्ट ये कॉस्ट है, और इसको हम नाम देते हैं टोटल इंटरनल फेलियर कॉस्ट। इसको सम अप करें, मैंने एक डैशबोर्ड रिपोर्टिंग सिस्टम बनाया था, उसके तहत मैनेजमेंट को अब बताएं कि जनाब आपकी वेस्टेज 21.9% थी। तो दिस इज द रिएक्शन फ्रॉम मैनेजमेंट को, उसको इट इज सरप्राइज फॉर द मैनेजमेंट। इतनी ज्यादा वेस्टेज है, वो अननोटिस जा रही है। अगर वो मेजर करना शुरू कर दें अपनी वेस्टेज तो इतनी वेस्टेज ना हो। तो हमारा जो टारगेट होना चाहिए दैट शुड बी जीरो वेस्ट। तो रिकमेंडेशंस क्या है कि रिफ्यूज, पहली है कि रिफ्यूज करेंगे जो मटेरियल हैजर्डियस है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, उसको इस्तेमाल ही ना करें। रिड्यूस करें वेस्ट को। अब जैसे स्टील हम मंगाते हैं प्रोजेक्ट्स पे, अगर हम कट टू साइज स्टील मंगाएं तो वेस्टेज कम होगी। अब उसके अंदर सीमेंट के अंदर हम पहले वो बैग में सीमेंट मंगाया करते हैं, बल्कर्स के अंदर आता है, बैग की जरूरत नहीं पड़ी तो वो हमने रिड्यूस कर दी वेस्टेज, सीमेंट की कॉस्ट भी कम हो गई और हमारा वो जो वेस्ट होता था सीमेंट बैग और उसके साथ जो डस्ट होती थी उसको भी हम सेव कर लिया। रीयूज करें, जो मटेरियल समझते हैं कि वेस्ट हो गया उसको पॉसिबिलिटी देखेंगे कहाँ कहाँ उसको रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकिल कर लें, डिस्पोज कर लें। ट्रेनिंग दें अपने स्टाफ को, वर्कर्स को कि मटेरियल को हैंडल कैसे करना है। फॉर्मुलेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ रेगुलेशन, जैसे मैंने पीछे कहा कि वो पाक EPA में स्पेसिफिक टू कंस्ट्रक्शन वेस्ट को ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है, तो वो मेरे ख्याल में उसके अंदर होनी चाहिए, थोड़ा एनफोर्समेंट होनी चाहिए कि जो इस तरह से वो फेंक आते हैं रिस्पॉन्सिबल तरीके से कंस्ट्रक्शन वेस्ट, उसको कंट्रोल किया जा सके। इम्पोजिशन ऑफ फी ऑन डंपिंग टू एनकरेज साइकिलिंग, जो किस तरह से डंप करता है उस पर प्लेंटी हो या कोई अगर डेजिग्नेटेड साइट है उसकी फी होनी चाहिए, तो वी शुड एनकरेज के उसको रिसाइकिल करें। इसमें प्रॉब्लम अभी ये है कि हमें रिसाइकिल जैसे एग्रीगेट है, एग्रीगेट हर कोई बिल्डर अपने लिए रिसाइकलिंग प्लांट नहीं लगा सकता, छोटा सा प्रोजेक्ट होता है उससे बड़ा उसका वो बन जाएगा रिसाइकलिंग प्लांट की कॉस्ट। तो इसमें अगर कोई प्राइवेट इन्वेस्टर्स हों तो जो इस तरह के मटेरियल वो खरीद लेंगे कि खरीद के जाके उसको रिसाइकिल करके वैल्यू एडिशन करके उसको मार्केट कर लें। सर दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू। ग्रेट और शायद थैंक यू वेरी मच। एक तो यह कि आपने थोड़ी अवेयरनेस, रियली यू क्रिएटेड एन अवेयरनेस और दोज विल बी वाचिंग दे वुड नो। आई एम सरप्राइज्ड दैट पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में there is no mention of construction waste. This is the priority. You know, we have got stagnant perhaps. Status quo mein hum believe karte hain. Somebody should have thought, and we inshallah write to them that they have to amend and focus on. मैं एक थोड़ा सा एक चीज आपके पास छोड़ना चाहता हूँ. They are very
accomplished people. एक तो ये है कि what ये पाकिस्तान बिल्डिंग कोड है, बिल्डिंग कोड, इसमें कुछ वेस्ट के रीयूज का कोई मेंशन है कि नहीं है? बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान, आई डोंट नो, इसमें बाद में आप आंसर करना चाहें। और दूसरा बात यह है कि जब इस पे कोई एक विलेज विजडम भी होता है। मैं आपको एक बताऊं कि आई हैपन टू विजिट ए होम ऑफ वन ऑफ द लीडिंग आर्किटेक्ट्स ऑफ पाकिस्तान, और उन्होंने लाहौर में, और उन्होंने बहुत खूबसूरत घर बनाया हुआ, और मैंने उनसे पूछा कि आपने ये क्या कैसे बनाया क्या? उसमें उन्होंने एक तो जो ट्रेडिशनल बिल्डिंग मटेरियल्स वो इस्तेमाल किए, और प्लस उन्होंने वेस्ट इस्तेमाल किया। मैं एग्जांपल आपको देना चाहूंगा कि उनका जो फर्श था उसमें हार्डन ईंटें थी, और उनको वो आगे उन्होंने मशीन से वो पॉलिश कर लिया हुआ था, और उन्होंने नॉर्मल चूना जो होता है उसमें भी डाल के, और उसके अंदर कोई एडेसिव मटेरियल डाल दिया था, जिसकी वजह से इट वाज बेटर देन एनी मॉडर्न पेंट। टैलेंट है, थोड़ी सी विल और थोड़ी सी एनफोर्समेंट चाहिए, सो ये जो हमारा कंस्ट्रक्शन वेस्ट का मसला जो है हल हो जाएगा। यहाँ एक ये जो हमारा एक टिपिकल मेंटालिटी है अर्बन एरियाज की, मैं उसको डिफाइन करूंगा कि हम घर को साफ करके चमका के और वेस्ट जो गंद है, जो गार्बेज, बाय स्ट्रीट में डाल देते हैं। और मुनसिपल कॉम हम क्या करते हैं कि हम जो सिटी का वेस्ट होता है वो टाउन से बाहर जाके, सिटी से बाहर जाके डंप कर देते हैं, नॉट रियलाइजिंग दैट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दैट लैंड विल बी यूज्ड। देयरफॉर थोड़ी सी अवेयरनेस तो होलिस्टिक अप्रोच चाहिए। You talked about management, that because of poor management the construction में cost भी ज़्यादा हो जाती है, labor idle रहता है. So this is a good opportunity to switch gears. We have a young person, relatively younger person, who's a project manager and in a company, and I would not now request Usama Rauf. He is director of project management at a company. I think एक तो new generation है, relatively younger person, new techniques, and he's from the field. Over to you, Usama, please. Usama, are you listening? Usama? Usama, are you online? Usama, sir, I'm unmute online. yourself. Can you hear me, sir? Usama, are you there? Sir, I'm there. Can you hear me? Yeah, we can hear you. We can watch you. Please, floor is yours. Can you guys hear me properly? Can you listen to me? You are thumbs up. You are audible, loud and clear. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, thanks to Janab Harun for letting me speak on this forum, and being a graduate of NAD and sitting in front of two of the most profound teachers of our institution, it's a great honor for me to speak. Sorry, sir, I can't hear it properly. Usama, we can hear you. Please go ahead. There was some Okay, background noise. Please go ahead. Okay, sir. So again, coming to the point, thanks you guys for letting me speak on the topic. The topic given to me is minimizing structure creations on construction site. First of all, I would like to describe what kind of wastages of materials occur on construction site, especially in Pakistan. There are, like, when we are using RCC, obviously cement, crush, sand, and then when it comes to the partitioning of walls, blocks and bricks are being used, and a lot of debris is created because of that. Then when it comes to the finishing items, we have got a lot of items that are being wasted because of mismanagement and other issues, which are such as wood. Then we talk about glass, then we talk about aluminium, tiles, water, electricity, etc. So
these are the things which creates waste on the site. Now let's come to the point that how can we minimize them and what technologies or SOPs or advancement we can bring into our construction industry, because construction industry, as already told by Dr. Suresh Lodhi, is one of the leading industry in Pakistan, and a little focus is being made on this topic, which has been discussed today in detail by all of you senior people. So first of all, according to the little experience in front of you guys, which I have gone through, and at the project which I am handling right now in Islamabad, it's like 3 towers comprising of 3 basements and ground plus 21 floors, total covered area of approximately 3.4 million square foot. So when you're talking about a height of 250 feet, you can well imagine the amount of debris being created because of these elements used on each floor, and the cost of removing this debris from the site to the ground floor, and then obviously transporting it to the areas where you can again just dispose it off and creating a landfill, which is not good for the use of other people as well. So the methods, there are certain techniques which the developed countries are adopting. Like, for example, when it comes to partitioning walls, the most important element being used in Pakistan is bricks and blocks. So we can replace it with using drywalls, and there are different types of drywalls, cement board drywall, gypsum drywall, and EPS panels as well. The advantages of using these kinds of techniques is not only that you can save a lot of time as compared to the normal activities, it consumes lesser amount of time, lesser skilled labor to install these walls, but also the debris which is being created because of blocks and bricks. The masons working, obviously the plaster work then is being done on these walls, creates another mess, and a large amount of cost is being consumed because of housekeeping. Because we are handling alhamdulillah 2 to 3 mega projects right now in Pakistan, and as rightly said by Dr. Shahid Mahmood as well, that when it comes to the percentage of this wastage, every contractor might be saying without any logical working that it's like 2 to 3%, but on the contrary, it goes beyond 10 to 15%. And when you're talking of a project of a nature of more than 10 to 15 billion, then this cost is a huge, humongous amount. Then again, certain other elements which I would like to talk about is that we should have certain kind of techniques and technology to have fair-faced concrete, so that we don't go for more plastering work and no debris is created. And by using these techniques, and the advantages what we can gain is that the less waste material will go into the landfill areas, obviously lower risk of pollutant incidents, and obviously lower carbon dioxide and monoxide emissions, and ultimately resulting in cost saving for the contractors, and also it would be for the betterment of the project and also for the country to have these kind of things. And one of the most important factor in multi-story buildings is the use of the formwork, the conventional formwork, which was being used, and now the technology is being implemented with the use of formwork like RMD and quick formwork and peri formwork. With the use of this kind of formwork, the lesser wastage is created because wooden battens and pliers are used that in that quantity in which you use in the conventional shuttering system. And also, again, coming back to the same point that time is the money. And if we can save time, and along with that, we can control the waste materials that are created because of these all activities that are being done on site, a large amount of a participation can be done in the betterment of the environment and also for the construction industry. So I guess I'll sum up my points with this. I hope I have clarified the topic which was given to me, and it was a brief one, but I hope I have made my point clear. Okay, thank you, Usama. We actually wanted to have, as I said earlier, that what we wanted was some input from younger people, because we all are pretty senior people, though working.
One thing I have discerned that the new generation is short and crisp, and they want to convey maximum in minimum time. That is in no way to undermine, Osama, your presentation. We will engage you more in question and answer session. Well, I have few questions which have been trickling in. It is regarding उर्दू में उन्होंने किया है कि क्या ईंटें भी रिसाइकल हो के इस्तेमाल हो सकती हैं और उनकी कोई स्ट्रेंथ में फर्क तो नहीं पड़ता. उसामा, आप पहले बताइए ना, फिर मैं बाकी से पूछता हूँ. सर, अगेन इट डिपेंड्स ऑन कि आपकी ब्रिक्स की जो क्वांटिटीज जो आपकी वेस्टेज में जा रही हैं, व्हाट आर मतलब उसकी डायमेंशंस क्या हैं. अगेन इस लेआउट पे बड़ा डिपेंड करता है. वन ऑफ द पॉइंट व्हिच आई मिस्ड वाज कि जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं एंड द आर्किटेक्ट्स व्हिच आर प्लानिंग एंड गिविंग द लेआउट्स, if they can like little bit emphasize on the planning and layouts by considering the tiles especially, and obviously the blocks and bricks as well, that if proper dimensions can be taken into account prior on the table, then giving it to the execution team, lots of wastage of tiles can be saved, because the amount of porcelain and the ceramic being wastage on site can be controlled by this. And now coming to the question, sir, you asked, yes, bricks can be utilized in different other elements as well, but again, it depends on the dimensions that are being used and being wasted as well. If the dimension of the wastage of the bricks is so smaller, it can only be used in pavings and flooring, but it cannot be used in having walls or any kind of that element, sir. Thank you. मैंने as a layman, as a user कह लें, आप किसी मैंने एक आर्किटेक्ट को भी ये करते देखा कि ईंट कौन सी लगा रहे हैं. मैंने कभी फलां जगह से ली. उन्होंने क्या किया कि 2 ईंटें पकड़ी और आपस में उन्होंने टकराई, और उससे अगर टूट गई तो ठीक है, ये काबिल इस्तेमाल नहीं है, नहीं टूटी तो हाँ ये ठीक है, इस्तेमाल कर लें. तो ये देखें, देखिए एक हाई राइजर स्ट्रक्चर्स, बड़े स्ट्रक्चर्स बनते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द जिस पे लोग इफेक्ट होते हैं, दैट इज जो जिसने 10 मरले 5 मरले कनाल का घर बनाना है, उसके लिए अवेयरनेस, जैसे कि डॉक्टर शाहिद ने काफी अवेयर किया. हम इस पे और रिसर्च करेंगे कि एक लेमैन आदमी जब घर बनाता है तो क्या क्या चीजें रीयूज कर सकता है ताकि उसका कॉस्ट कंस्ट्रक्शन की कम हो. मैं इसमें चूंकि वी हैव टाइम, आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर सरोज लोधी, सर आप कुछ कहना चाहेंगे जो अब तक प्रोसीडिंग्स हुई हैं, बट दीज आर नॉट द वाइंडिंग कमेंट्स. वी विल आस्क फॉर योर वैल्यूएबल ओपिनियन लेटर आल्सो. Thank you, sir. Thank you very much. So, there are 2 things that I would like to dwell upon, and both the comments came from you. One is recycling of bricks. जो ईंटें हैं, इनको recycle किया जाता है क्या नहीं. I'll share some interesting experience that I've seen in Bangladesh. Bangladesh में नहीं होता, and there is no natural aggregate available in Bangladesh. So for construction they need aggregates. तो वहाँ standard practice है कि पहले clay bricks बनाई जाती हैं, फिर उनको तोड़ा जाता है smaller size में, so that they become aggregates and they're used in construction. So there is no harm in using aggregates for construction. However, there is a big however. कि कोई standardized procedures हो और कोई standardized coding हो. But ये standardized procedures नहीं बनेंगे, standardized design guidelines नहीं बनेंगी, this will remain a limited technology with no engineering input. पाकिस्तान में already जो पाकिस्तानी built environment है, it is about 92.5% non-engineered, and only 7.5% buildings are engineered. So we don't really want to add non-engineered construction into the country. So ideas है, लेकिन जब तक उसके design guidelines और proper approval की of guidelines at the proper forum नहीं होगा, we have to be a little careful. And you have made another comment regarding the building code and use of recycled material in building code. I would like to point out a point made by Dr. Asadur Rahman. कि चाइना में तो उन्होंने डिजाइन गाइडलाइंस बना ली है रिसाइकलिंग एग्रीगेट्स की,
लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जैसे हम लोग फॉलो करते हैं, स्पेशली द वेस्टर्न वर्ल्ड, यूएस एंड यूरोप, वहां पर अभी एग्जिस्ट नहीं करती है। और जब ये एग्जिस्ट नहीं करती है तो जाहिर है कि वो हमारे यहाँ भी कोड्स का हिस्सा नहीं है। और वो जब तक नहीं होंगी जब तक के सारे प्रोसीजर्स को न सिर्फ टेस्ट किया जाए, उस पर थॉरो रिसर्च की जाए और फिर कुछ स्टैंडर्ड गाइडलाइंस बनाई जाए। दिस इज एन इंडिजिनस प्रॉब्लम and the Western world doesn't have that kind of a problem, or maybe not that magnitude. तो उनके यहाँ major issue नहीं, but it's an indigenous problems where the universities and the industry has to work together to come up with these guidelines. The reason I'm mentioning this thing is that I have been part of all the building codes that were developed in Pakistan, and very recently the building code of Pakistan was revised, and it will be made available probably in the month of December. And I was the head of the committee which has drafted the revised version of the building code. लेकिन वो जब तक मुमकिन नहीं है जब तक कि we have thorough research and we develop design guidelines. And this also applies to a lot of work being done by FWO. And I know the historical background. I know Dr. Heather from Michigan who brought in this idea, and eventually now it is being used for recycling asphalt. However, once again, the standard design guidelines are not available, and there is ample evidence and a very successful evidence of use of recycled aggregates in pavement. I think we should, at some forum, sit down and try and develop standard guidelines for recycling in different construction sectors. Thank you, sir. थोड़ा कमेंट करना चाहूंगा जो चीजें आपने कही। पहली चीज तो ये देखिए, अभी आपने बताया ना कि वेस्ट में वेस्ट के रीयूज का कोई ऐसा मैकेनिज्म या स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, और फिर आपने बड़ी अच्छी बात कही कि वो उसका उन पे फोकस नहीं है बिकॉज दे डोंट नीड इट, इट्स नॉट परहैप्स रेलेवेंट टू देम। देयरफॉर वी शुड हैव होम ग्रोन सॉल्यूशंस, जो कि हमारे जहाँ मटेरियल्स अवेलेबल हैं, हमारे लिविंग कंडीशंस हैं, लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन है, उसके हिसाब से हमारे सॉल्यूशंस होने चाहिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आई हैपन टू अटेंड द इंटरनेशनल मरीन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस इन लंदन, तो और दैट वाज रिगार्डिंग द रिसाइकलिंग ऑफ शिप, जो होता है शिप रिसाइकलिंग, जिसको शिप ब्रेकिंग भी कहते हैं। आपको पता है कि एडवांस वर्ल्ड में शिप ब्रेकिंग है ही नहीं, और जो जहां है वो बहुत ही छोटे पैमाने पे है और वो बड़े स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में करते हैं। बाकी सारा वेस्ट जो है ये साउथ एशिया में भेज देते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा शिप ब्रेकिंग पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में होती है। चाइना ने भी कह दिया कि वी विल आल्सो नॉट रिसाइकल एनी वर्ल्ड वेस्ट, इट इज वेस्ट, और सारी पोल्यूशन जो है हमारे यहाँ होती है वो वहां आपके। सो वी नीड होम ग्रोन सॉल्यूशन, वी नीड आवर ओन रिसर्च। और मुझे बड़ी आई वुड लाइक टू कमेंट ये जो डॉक्टर ब्रिगेडियर सलीम बी बेग ने बात की थी कि जी हम रिसर्च भी खुद करते हैं, नस्ट के साथ हमारा है ये एकेडमिया लिंकेज एंड ऑल। अगर ये हम अपने सॉल्यूशंस बनाएं तो वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होंगे और हमें रेलेवेंट भी होंगे। यस, वी शुड गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम व्हाट चाइना इज डूइंग और वेस्ट इज डूइंग, बट we need indigenous solutions. Sir, कुछ questions और आए हैं। Is there any institute which is teaching construction waste management? लोहित साहब, मैं आपसे ये एक सवाल कर सकता हूँ? So not that I know of. That's a very simple straight answer. लेकिन ये कि construction waste management as a course तो शायद नहीं पढ़ाया जा रहा, लेकिन उस पर रिसर्च हो रही है। जैसे कि ब्रिगेडियर नसीम ने फरमाया कि नफ्स के साथ करें, and this is not a new research. This I know that it is going on since 2004-2005, which has eventually has resulted in the use of hundreds of kilometers of pavement in Pakistan. और उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स बेनिफिट होते हैं। ऐसा नहीं है कि रिसर्चर सिर्फ एक प्रोफेसर्स करते हैं, उनके साथ उनके स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व, वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स में भी करते हैं और मास्टर्स की थीसिस और एमफिल की थीसिस में भी करते
Same is the case what Dr. Asad has mentioned. I know, being his colleague for a long time, that there is a lot of work in recycling of concrete aggregate is being done, which is benefiting the students. So as a course, I don't think, to the best of my knowledge, and correct me if I'm wrong, लेकिन ये पढ़ाया जा रहा है. तीसरी चीज ये कि जैसे डॉक्टर शाहिद महमूद ने फरमाया, और उन्होंने मेरा ख्याल है जितनी एक्सटेंसिव रिसर्च की है और उन्होंने उसको आखिर की एक स्लाइड में दिखा दिया, और आई कैन इमेजिन द अमाउंट ऑफ effort that has gone into coming up with 21.9%, and it's an astonishing number, which I wish, अगर प्योर इंडस्ट्री होती मैन्युफैक्चरिंग में, और अगर उनके रिजेक्ट्स 21.9% होंगे, तो वो they cannot make profit, and I wonder why we are not using this cost-effective approach. So there is an indirect way of learning through research and through development projects. लेकिन ये कि क्योंकि अभी तक हमने इसकी तरफ फोकस नहीं किया, हमने इसको साइंस के तौर पे डेवलप नहीं किया, इसीलिए इसका अंडर ग्रेजुएट करिकुलम हिस्सा नहीं है. ठीक है, थैंक यू सर. एक क्वेश्चन है सर, मोस्ट ऑफ वेस्ट इज ड्यू टू पुअर स्किल्ड लेबर. व्हाट इज बीइंग डन टू ट्रेन देम? ये स्किल डेवलपमेंट से है रिलेटेड. मैं आस्क डॉक्टर असद सर, वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दिस? Can you repeat the question? सर, उसने कहा है कि मोस्ट ऑफ द वेस्ट इज ड्यू टू पुअर स्किल्ड लेबर. व्हाट इज बीइंग डन टू ट्रेन देम? होता ये ना सर कि जो हमने घर बनाते देखा कि अगर लेबर रेट पे बनेगा तो वो डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, और अगर अपना मटेरियल लगाना हो तो उसके ऊपर बड़ा कंजर्व करते हैं. तो वो कह रहे हैं कि ज्यादातर वेस्ट तो पुअर ट्रेन्ड लेबर होती है. इसके बारे में क्या ख्याल है? And this is true. Definitely, if you see our tendency, what is our tendency? If you are looking for a small residential construction, we even to get it properly designed. We don't want to go to consultant to pay some fee to him or her. So that's what we do in a small scale construction. So that problem is there when you have a small scale construction and you don't want to hire the proper personnel over there. But definitely, if you have a larger scale construction where you properly just do everything, and this factor is minimized over there. So at a small, I do tend to agree with, but at large scale, definitely this factor is not much there. Oh, okay. Thank you, sir. Sir, I would like to answer this question as well, if you can allow me, sir. Yeah. Sir, the question is very valid, and throughout the experience, but we have got so far right now is while selecting the contractor or the consultant on a smaller scale or even for a larger scale, I guess the client should be rational as well, because if the criteria for selection, a contractor would always be going for the lowest bid, then the quality will always be compromised or may be compromised. So I guess the rationalism should prevail from the client side as well while selecting any person for the right job. Right man for the right job will make a lot of a difference. Thank you. Your point is valid. अगर मुझे भी इजाजत दें, मुझे पता है कि I'm doing a lot of talking. I'm not supposed to do that, but since you're welcome. Thank you. I'll try and answer this question by asking a question. Is there a program in the country where labor certification and construction worker certification is needed? I don't think so. No. So, the construction is a construction chain. And the one link of the chain are the engineers who are responsible for design. Then there is a bigger link of the chain, which are the people who are executors. And the executors have supervisors, surveyors, skilled labor, semi-skilled. Except for regulating and licensing the engineers, we don't have a mechanism of controlling quality through licensing or through any other formal or informal education.
जब तक ये regulatory framework is not decided as one complete link, this is not going to happen. मैं तो आपसे ये suggest करूँगा कि पाकिस्तान, can you hear me? I think there's some Yes, problem. Yes, sir, you are loud and clear. आप बताइए. Loud and clear, sir. लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी sir, loud and clear. Hello? सर आवाज Can you आ रही है hear me? सर. Thank you. You know, मैं तो I'll really would like to encourage you to have another session on the regulatory framework of construction and manufacturing industry in the country. और उसमें आप invite करें Chairman Pakistan Engineering Council को, because by act Pakistan Engineering Council is the sole agency to regulate engineering in the country. Whether it is engineering education, whether it is engineering training, whether it is licensing of contractors and consultants. But unfortunately, the regulatory framework only is applicable to the graduate engineers. And we really need to have a system where not a single brick is laid unless people are certified and trained. I've seen this thing happening in the developed world where an electrician, a plumber, a bricklayer, everybody is trained. Even in the Middle East, you need to have some certification. I know that TEFTA and NEFTA, the national and the provincial vocational training authorities, are putting a lot of effort in training them. But now their focus is more towards skilled and semi-skilled labor in IT because it's less intensive, capital intensive. But there is a dire need to have a certification and education system at all tiers of this construction. Sir, thank you. Sir, with your permission, I would also like to comment, sir. Thank you, sir. Yes, sir, please. सर इसमें एक तो चेक्स एंड बैलेंसेस का भी इशू है. अगर हम लेबर लगाइए उसके बाद चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है तो मटेरियल खराब करेगा. आपने उसको दिए हैं जनाब 10 टाइलें हैं या 15 टाइलें ये इस कमरे में लगनी चाहिए तो और इससे ज़्यादा अगर नुकसान करोगे तो उनसे मैं रिकवर करूँगा, वो देखें कैसे ठीक करके लगाएगा. हमारा जो सबसे ज़्यादा नुकसान करता है ना दैट इज़ प्लम्बर. प्लम्बर को जितना मर्जी कीमती सामान ला के दे दें, उसने जो खासतौर पे वो जो सॉइल वाटर के लिए फिटिंग्स करता है ना उसको नॉर्मली हम चेक नहीं कर पाते. तो और वो उसका पता तब चलता है जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है, बाथरूम यूज होना शुरू होते हैं. आप कोई भी सरकारी प्राइवेट कोई भी बिल्डिंग ले लें, आपको बाहर से नजर आ जाएगा कि जनाब यहाँ पे इनके बाथरूम हैं, सारे सीपेज आपको नजर आ रही होगी. तो वो डॉक्टर सरोज ने जैसे कहा ट्रेनिंग की जरूरत है प्लम्बर्स को. ये जो खासतौर पर स्किल्ड वर्कर्स है ना उनको तो खासतौर पर प्लम्बर्स और इलेक्ट्रिशियंस को जरूरत है. मेसन्स वगैरह जिस तरह के हैं वो चेक्स एंड बैलेंसेस से वो कंट्रोल हो सकते हैं उनकी जो वेस्टेज. सर बिल्कुल ठीक आपने कहा. थोड़ा सा एक वर्क एथिक्स का भी प्रॉब्लम है और सुपरविजन का प्रॉब्लम है. हमारे स्किल डेवलपमेंट का तो वाकई इतने इंस्टीट्यूट बने हैं लेकिन वो स्किल डेवलप उन लोग ही करते हैं ये जो डिप्लोमा इंजीनियर्स एंड ऑल. अभी हमने इनिशिएटिव लिया है, जस्ट लाइक टू प्राइज यू, इकबाल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज एज एन एक्सटेंशन वेयर वी आर एस्टैब्लिशिंग अ स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट. और ये किन को स्किल डेवलप किसकी करेगा? टाइल लगाने वाले की, मिस्त्री की, और ताकि हमारे यहाँ नॉर्थ पर्टिकुलरली इन इस्लामाबाद रावलपिंडी हमारे आर्टिजन्स आर नॉट एज गुड एज इन लाहौर एंड कराची. तो इस पे हम काम कर रहे हैं एंड इंशाल्लाह विदिन वी हैव अ प्लान within 2 years we will have a full-fledged skill development institute in private sector. और इसमें it's like a we incubation we are doing and some other time I'll share the details with you. सर एक कुछ आंसर सारे आपने अपने मायराना जब आपने टॉक दिया उसमें आ चुके हैं, लेकिन मैं कुछ आंसर हो चुके हैं बट आई हैव टू रीड बिकॉज पीपल हैव. देयर इज अ लेडी आस्किंग वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग बट इंजीनियर्स आर हार्डली इन्वॉल्वड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसिंग एंड बिल्डिंग्स. ये डॉक्टर सरोज ने कह दिया था 7.5% कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स हैं जिसमें द इंजीनियर्स आर इन्वॉल्वड. वरना ठेकेदार आता है वो कहता है कि जी मैं आपको ये भी करवा दूंगा वो करवा दूंगा सब कुछ, और आर्किटेक्ट एंड ठेकेदार, इंजीनियर इज मिसिंग इन बिटवीन. This is the common practice. And ये एक और है, is there any regulation from municipal authorities which regulates wastage disposal? कोई ऐसा, मेरा नहीं ख्याल कुछ ऐसा है सर.
मैंने तो देखा कि बिल्डिंग गिरा के तो उधर ही वो मोटा मोटा सामान ले जाते हैं और जो एग्रीगेट वगैरह उधर फेंक देते हैं, ईंटें वगैरह ले जाके। एनी कमेंट्स ऑन दैट सर, एनीबॉडी? उसमें जो बाईलॉज है ना, बिल्डिंग बाईलॉज, उसके अंदर मैंडेटरी है कि इंजीनियर की सुपरविजन मैंडेटरी है, लेकिन वो होता ही है कि वो इंजीनियर ज़्यादा चार्ज करता है अपनी सुपरविजन को, तो लोग नॉर्मली उनको कागजों की हद तक वो रखते हैं, लेकिन उसके बाद उसको उसकी फी नहीं देते, तो वो भी सुपरविजन नहीं देता। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है कमेंट में, उसको कोई क्वेश्चन है which is open for comments as you feel like, but ये क्वेश्चन भी है, recently we have seen that on the direction of Supreme Court, high-rise buildings are being demolished. Isn't it senseless as to why they are allowed to build in the first place, and what about the premature wastage material? ये सर डॉक्टर सरोज इस पे कमेंट कर सकेंगे, कराची से बिलोंग करते हैं। डॉक्टर साहब, अरे आपकी विश है, आप करें ना करें, लेकिन मैं जरूर करूंगा। लेकिन सर अगर मुझे एक्सक्यूज कर दें, आई डोंट रियली वांट टू कमेंट ऑन अ मैटर व्हिच इज ओके सर, योर टोन एंड टेनर सेज इट ऑल। नहीं, उसने नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि इसमें क्वेश्चन में आंसर भी है कि उसने कहा है कि isn't it senseless as to why they were allowed to be built at first place. तो रेगुलेशन की जो हमने बात की थी, and I would leave it here with the comment that जब ये बन रही थी और इस पे हमारे रेगुलेटर्स को डिपार्टमेंट्स हैं, and it is mostly in Karachi, but it happens in Islamabad, Pindi, not Islamabad but Rawalpindi, and even in Lahore, where these mafias, कोई जंगल की, कोई फॉरेस्ट की लैंड लपेट ली, रेलवे की लैंड लपेट ली। दिस इज सो पीरजादा साहब, आपने ये क्वेश्चन किया था, इफ यू आर लिसनिंग, आई थिंक वी लीव योर कमेंट एंड क्वेश्चन हियर। सर, एक तानिया खुशाब something, tourism is increasing, all kind of construction waste is being dumped in rivers. What can be done to mitigate that? मतलब अभी perhaps ये, मैं तो बाकी, मुझे मरी का एक एग्जांपल है, वहां एक कंक्रीट का एक जंगल बना दिया गया है और उसने टूटना भी है किसी न किसी टाइम पे, तो उस पहाड़ के ऊपर ऐसे सीनिक जगह पे ये वेस्ट मटेरियल वगैरह। सर, आई वुड, असद साहब आप कमेंट कीजिए, डॉक्टर असद जी। जनरल साहब, इसमें अगेन दिस हैज टू बी रेगुलराइज्ड। अगर ये रेगुलराइज नहीं होगा, जिसकी जहां मर्जी है डंप करेगा, तो फिर यही सिचुएशन होगी। तो ये जब तक प्रॉपर रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स नहीं होंगे कि ये डंप कहाँ करना है, किस तरह करना है, जब तक ये मसाइल रहेंगे, तो आई थिंक वी हैव टू रेगुलराइज दीज थिंग्स, अदरवाइज दीज इश्यूज विल कीप कमिंग ऑन। ओके, ग्रेट सर, ग्रेट। अच्छा सर, अभी हम पार्टिंग कमेंट की तरफ आएंगे, सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द यंगर पर्सन। योर पार्टिंग कमेंट, उसामा। हमारे ट्रेडिशन ऑफ पार्टिंग कमेंट को वाइंड अप के लिए आप कुछ कहना चाहें? सर, जैसे सारे सीनियर्स ने कहा कि ऑब्वियसली आप बोले, यू आर लाउड एंड क्लियर, व्हाई डू यू हेजिटेट, बोले आप। सर, जैसे सारे सीनियर्स ने कहा, सर रेगुलेशन शुड बी मेड टू कि जहाँ पे आपके जो भी वेस्ट मटेरियल, इंक्लूडिंग वेस्ट मटेरियल से अलावा आपकी एक्सकेवेशन हो रही है, आपके बैकफिल जो मटेरियल निकल रहा है, दैट प्रॉपर जगह उसके लिए अलॉट हो, उसमें किस किस मटेरियल को कहाँ कहाँ डंप करना है, रेगुलेशन शुड बी मेड ऑन दैट। एंड यस, जो भी मटेरियल विच कैन बी रिसाइकल्ड, इट शुड बी ब्रॉट इनटू द यूज, ऑब्वियसली उसकी प्रॉपर्टीज को चेक करने के बाद। एंड लास्टली यस सर, के जो लेबर, जो स्टाफ है, दैट शुड बी ट्रेन्ड इनफ कि वो कंस्ट्रक्शन मिस्टेक्स की वजह से कोई वेस्ट क्रिएट ना करे, एंड दैट शुड बी मिनिमाइज्ड, और दैट इज द फाइनल स्टेटमेंट सर। थैंक यू। Usama, sir, comment, parting comment
डॉक्टर असद, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी जॉनसन, इसमें basically again I will repeat the same thing. For all of these things, all of the issues pointed out and cited, we need a proper sort of standardization, regularization, जी सर, आपकी and in some cases the legislations. So otherwise we will keep getting these issues time and again. So the other aspect, as Dr. Lodi also mentioned, skilled laborers, producing skilled laborers, and those certifications, they are again also important. So we have to work on in all the directions to make this thing happen. We can recycle the waste that is being generated through the construction. Thank you, sir. Thank you, sir. Very kind. Dr. Shahid, sir. सर इसकी मुख्तलिफ डायमेंशंस है. एक तो है कि सर इसमें यह है कि इसकी मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं. एक तो है कि मेकिंग रेगुलेशंस और गाइडलाइंस, फिर दूसरा है इसकी एनफोर्समेंट, कि वो उसको रेगुलेशन तो बन जाती हैं पर हमारा जो पुअर साइड है दैट इज एनफोर्समेंट. हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, लोगों नहीं उसको फॉलो करते. और तीसरा आ जाता है फिर इंडिविजुअल लेवल पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसके अंदर के वो उसकी वेस्ट मैनेजमेंट इस तरह से करे कि मिनिमम वेस्ट रिड्यूस हो, जिसको कि डंपिंग साइट पे जाना पड़े. और वो रिसाइकलिंग को हमें प्रमोट करना है. वो इंडिविजुअल जो है रिसाइकिल कर नहीं सकता. वो जो वैल्यूएबल जो रिकवर होते हैं वो कबाड़ी के बाद एंड अप हो जाते हैं. लेकिन जो हमारा कंक्रीट और वो दूसरे का रिसाइकलिंग है ना, तो उसके लिए प्लांट डेवलपर खुद लगाए या कोई इन्वेस्टर कोई ऐसा कोई उनको एनकरेज किया जाए कि उसको अंदर रिकवर करें, उसकी वैल्यूएशन करके उसमें से वो अपना रेवेन्यू कमा ले. तो इसके अंदर मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज पे काम हो सकता है, जैसे रेगुलेशन, एनफोर्समेंट, अवेयरनेस, ट्रेनिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फिर वो लेबर. तो सब बहुत सारी डिमेंशन है, बहुत एरिया है, इसके अंदर बहुत काम करने की इसमें जरूरत है. थैंक यू सर. Thank you, sir. Dr. Suresh Lodi, you have the responsibility to, sir, you are chairing the proceedings. Now your winding comments, sir. Thank you, Sir. Thank you very much. All the four speakers have deliberated upon different kind of areas and topics of extreme importance, and obviously this is a very truly highlighted. Dr. Asad has gone into the details of the engineering properties and the data that he and his team is collecting in terms of research, and they're working closely with China. We also came to know that China has developed a lot of standards in use of recycled construction material. I just want to point out here that if you are traveling from Islamabad to Taxila on GT Road, right outside Islamabad, you will see a lot of mountains being cut as quarries. And this is giving a very ugly look to the city, apart from all the other environmental hazards. And it's because construction need materials, and that material comes out of those things. If it could be regulated properly, like being done in China, I think we can optimize on the waste, and at the same time we can protect our environment. Brigadier Dr. Naseem has shared his experience of recycling pavements, and obviously, as far as I know, there are hundreds of kilometers of road being recycled, and there is a serious financial implication also. There is with different proportions of recycling material, there is a significant saving of 0.49 million per lane per kilometer to 1.5 million rupees per lane per kilometer. And that is an area which requires a lot more standardization, and we have to learn from the work that is being done at the national highways, and this should trickle down to the provincial and tertiary highways. Detailed elaboration of his work and his assessment of the waste, and he has spoken about the hazard waste, and unfortunately absence of no regulatory framework in handling that
kind of construction hazardous waste. He's also highlighted the illegal dumping site. Since there's no system in the country, the waste has to be dumped somewhere. And if there is nobody watching and controlling, obviously, we are at liberty to very detailed distribution of the composition of the construction waste and eventually the effect of the cost, the impact could be made. $1 million, a billion rupee projects are very common. And if we are talking about construction loss of about 20%, we're talking about a huge savings. This can bring the cost down of the construction. This can also optimize the profit of the contractors. And above all, it can also streamline time, because time was also monetized when the construction waste was calculated. And as he said, majority of the projects in the country and in all over the world, there are always cost overruns and time overruns. And from our engineering definition, these are the failures. And if this could be controlled, I'm sure it will be a win-win situation for all the stakeholders in the country. Young man Osama has pointed out some of the very, very important things which are normally not very diligently controlled. Plastering, obviously, is a huge waste, the way the walls are plastered in the cement concrete. And at the same time, the cement mortar rather, and at the same time, the things like tiles. If we have standardization of our construction, then our industry, the downstream industry, should also be producing materials according to the standards available. And then hence there will be less wastage in tiles in terms of having the size of the rooms. So, there is a lot of room for two things in a nutshell. Number one, the standardization. And number two is the regulatory framework. I would certainly see that by this particular webinar, these things have been highlighted in a very effective manner, that the country needs to work on an effective way of construction. Obviously, construction, as I said earlier, is a big economic booster and is an employer. So we must encourage construction. However, if we can develop regulatory framework and we can develop, the concept of recycling, there will be a lot of saving in construction, which will help the economy, which will help the people, which will help the homeowners, which will help the organization, the Lama in I think Dr. Sarosh Lodhi, sir, can you hear us? Can you hear me? There is some connectivity problem. Sir, can you hear me? Sir, now we can hear you. Now we can hear you. We can hear you, sir. You're not audible now, sir. Okay, I'll take this opportunity to wind up here, and I would like to very profoundly thank Dr. Sarosh Lodhi, Dr. Shahid Mahmood, Dr. Asadur Rahman, Brigadier Dr. Muhammad Naseem Beg, and Osama Rauf. This is something, a webinar, I think it is a time well spent, and we have dilated on a number of issues regarding waste, construction waste management. It is a subject which is not much talked about. And I think the people who will watch it further, people watch our webinars in the evening and who have been on the line, the academia, the engineers will benefit a lot from this. And we will submit a formulate a report on this. And I hope